microphones. चेक। हाय एकता, मेरा सवाल आपसे है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बढ़िया है, देख नहीं पाएंगे शायद। सवाल ये है कि आपके लेफ्ट में स्पीकर सवाल ये है कि जब जब भी इस फिल्म का जिक्र हो रहा है, सीबीएफसी का जिक्र होता है, पहलाज निहलानी का जिक्र होता है, तो अभी एक मोमेंट बन चुका है और एक पोस्टर भी ऐसा आया जिससे सभी बेहद खुश हैं भारत में बहुत ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगी और सीबीएफसी के रुख के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है सीबीएफसी से। मेरा प्रॉब्लम पूरे समाज से है, जो एक पॉइंट पे आके इसी बात को अपनी तरीके से कहता है। तो सीबीएफसी इज़ एक्चुअली अ मिररिंग सोसाइटी। बहुत छोटा हम इशू कर देंगे अगर हम सीबीएफसी के बारे में बना देंगे इस पिक्चर को। ये बहुत बड़ा इशू है। आप नॉर्मली अगर किसी लड़की से बात करेंगे तो आप उससे 5 इंसिडेंसेस ऐसे पता कर लेंगे जो उसके साथ दिन में हुए हैं। एक साल में तो 5-10 तो निकलेंगे ही, जहाँ उसको अपने औरत होने पर she has had to prove herself a little harder, maybe in a male dominated workplace, at times with a certain amount of having to be come across as a smarter woman if she is good looking. मतलब there are so many, she's learned combat from a very young age. और आप ये जो उंगली है ना, ये लिपस्टिक जो है, ये उस समाज पर है जो हमें बाहर आने नहीं दे रहा, हमें अपनी आवाज को दबाने की पे मजबूर कर रहा है। तो इट्स नॉट अबाउट सीबीएफसी, इट्स अबाउट एवरी, एंड इट्स अबाउट एन आइडियोलॉजी, इट्स नॉट अबाउट मेन अगेन। Please, I am going to do a campaign called Lipstick for Men. Because no, it is. Because there are lots of men who've made us the women we are, like my father. And there are lots of women who insist that there's a son born and put their daughter-in-laws through various children and abortions. So it's not about women and men, it's about ideology. So yeah, it's about patriarchy. Yeah, it's To about put it in a simple word, it is patriarchy. And it is something that, like Ahana said, women are battling all over the world. You know, I grew up at a time when my mom and people of her generation had fought to be where they were. I stand on their shoulders. I got my education. I got the kind of freedom and life that they were not able to have. And the sad thing is, I can't pass it on to my daughter. How sad is that? In one generation, we have given up all these advantages and we are moving backward rapidly. So it's patriarchy. It's an incomplete project, this project of dealing with patriarchy. And we all have to accept that we have a role to play, men and women. Very important to understand that it's not a single gender issue. अलंकृता, फिल्म कई समारोहों में जा चुकी। हमारी आपसे उन दिनों भी बात हुई थी जब इशू चल रहे थे सर्टिफिकेट के। अभी कितने रिलैक्स्ड हैं एंड 21 जुलाई के लिए किस तरीके से तैयार हैं? Up to I'm having yeah, I can't believe it's happening actually. I was so used to this thing of like it's not going to happen. And I think it's really, really wonderful that Ekta came on board, because I think that has really like made the whole release like so much fun, and you know that at least we're coming out with a lot of strength. So I feel after battling so much, I would have hated to have a very small kind of struggling to release kind of an energy with the film. So I feel like the film really deserves a wider audience. So I'm very, very happy that there is a way of reaching out to a wider audience. So I'm excited, and I want everyone to come to cinemas on 21st July. Hi, Shivangi this side from Aaj Tak here. So मेरा सवाल आप सभी से है कि जिस तरह से ये फिल्म है वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, या जो वुमेन्स की मांग है या डिमांड है, जो इच्छाएं हैं उसके बारे में बात करता है, क्या आप लोगों को लगता है कि सेक्स एक मुद्दा है जहां पर हम औरतों की इच्छाएं या औरतें लड़ रही हैं? क्या सेक्स के मुद्दे से ही हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, या कोई और मुद्दा लेकर हम फिल्म नहीं बना सकते थे? I think before I ask anyone else to answer, I would really like to answer this question. I think the side. Sorry to interrupt. अगर आप ये जवाब हिंदी में देंगी तो बहुत अच्छा। तो मुझे क्या लगता है कि औरत की जो बॉडी होती है ना, वो सबसे पहला एरिया होता है कॉन्फ्लिक्ट का, and therefore I feel that many issues about women finding themselves, finding freedom, are definitely related to how much agency and control they have over their own bodies.
So that's what I feel. So I don't feel that kuch disconnect hai between other issues and all of that. But this is a story about 4 women, so it's not even that, yeah. Yeah, I would say sex एक बहुत छोटा अंश है इन 4 औरतों की जिंदगियों का और उनकी कहानियों का. ज़रूर इम्पोर्टेंट अंश है, जैसा कि सबकी ज़िंदगी में होता है. लेकिन सिर्फ ये ही एक मसला है ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगी. अनफॉर्चुनेटली ये जो सारे तमाशे हुए हैं और जिस तरह की पब्लिसिटी हमको मिली है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक गंदी पिक्चर है. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो बंदे ये पिक्चर गंदी पिक्चर सोच करके आएंगे ना, तो बहुत दुखी होंगे. आई एक्चुअली बिलीव सेक्स ना ऐसी चीज़ है जो हमने बहुत सालों से व्हेन इट कम्स टू वुमेन छुपाई है. अनफॉर्चुनेटली आपको बोला जाता है आप अपने आप को ढको, क्योंकि फिर उस आदमी का भेड़िया बनना अलाउड है. बिकॉज यू नो व्हाट, आपने अपना शोल्डर दिखा दिया. अरे मेरा शोल्डर है, आप भेड़िए बने. इट्स लाइक सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. हम वी आर नॉट बीइंग एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेक्सुअल intentions or sex and sexual crime. Sexual crime is a problem. Sex, if it's consensual between 2 people, is not a problem. And unfortunately, the more we are dabawing this topic, we are making more and more women responsible for any kind of sexual desire that is raised in them or in a man. Frankly, really guys, we have, I mean, I would like to say, like, it's a world where God has given us a body and it feels, and as long as we are in control, as long as we deal in anything that's consensual, morality should be our personal issue. It cannot be thopoed on us and made an excuse for anyone else to behave badly. That's why dealing with sex and discussing sex is as important as discussing a lot of other things, because this whole prohibition has made it okay for us to be more guilty about our legs being shown. I mean, we've had so many photos of women come out, actresses, whose shoulder was shown. Oh, you know what, a malfunction happened and it went all over the place. Come on, man. There are many malfunctions I'll show you of men, but no one covers them. And it's time we decide to discuss sex like adults. Without playing it up. If you see the movie, it is not at one point vicarious. Or it's not at one point exploitative. But it's never running away from the issue. It speaks as it is. That's why it stares you in the eye. Alankrita, hi. A lot of reports say that the poster is directed at the CBFC. Did you intend it to be that way? I think Ekta already answered that question, but just to repeat, no, not at all, because the poster is directed at the system of patriarchy, which actually oppresses women. And it's really about being rebellious and fun and wanting to do our own thing. And the world can go to hell.